Okay, let us start now. So, it is my privilege to introduce our distinguished speaker for today's session on cyber awareness, Dr. Saiful Islam. Dr. Islam has more than 18 years of teaching experience and holds a PhD in computer science and engineering from prestigious Indian Institute of Technology, Kanpur, IIT Kanpur. He has actively contributed to the global research community, serving as a member of various technical program committees in India and abroad. He has authored several research papers and articles and presented his work at international conferences in France, South Korea, China, India. His research experience spans information hiding, digital forensics, and image processing, areas highly relevant in today's digital world. Please join me in warmly welcoming Dr. Saiful Islam. I would like to invite Dr. Saiful Islam to start the session. Thank you, Faraz. So, am I audible? Yes, Yes, sir. sir, you are audible. Fine. Thank you. Let's just wait a minute. So, my presentation is visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. thank you. So, just a minute. Can you tell me what you are expecting about cybersecurity from me on this session? What is your expectations? Anybody? सर जैसा कि आप भी जानते हैं कि अतः हम लोग 28 से पर्टिकुलर इसी टॉपिक के इर्द गिर्द बातचीत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा सीखने को मिले जो अब तक किसी भी हम लोगों के क्लास में ना सिखाया गया हो। तो ओके फाइन, तभी आप लोगों ने क्या क्या सीखा है? जस्ट गिव मी अ ब्रीफ आइडिया सो दैट आई कैन अरेंज अकॉर्डिंगली। सर साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, या किस किस तरह से अटैक्स होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, हमें कैसे बचना चाहिए, या अब जो अपनी सिक्योरिटी है उसको किस तरह से ऐसे हम बनाएं कि साइबर अटैक कम से कम हो, जैसे एंटीवायरस अपडेट करना, सिस्टम को अपडेट करना, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, फिशिंग के बारे में, मालवेयर के बारे में, वायरसेस के बारे में, ट्रोजन हॉर्स के बारे में। ओके फाइन, but this much you have already done it. Yes sir, yes sir. Okay, so I will be covering this thing in brief, but I will come to the topic that is more relevant to you, means how you browse it, how you do instant messaging there, and something that is directly visible on you, how you can prevent these things. Fine. So is there any problem with the language issue here? I will be mixing both Yes English, sir. Hindi, Urdu, so that you can able to understand. Sir, bilingual. Bilingual. Okay, fine. So just a minute. So my presentation is visible to you? Yes sir, yes sir. So I will just give you a brief introduction and tell you about what the cyber security is. So first thing that I want to discuss here is about the importance of security, and you must be aware of it. आप सबको पता होगा कि security की importance क्या है. Now, question is that which is a secure system? So if we go by a definition of Professor Gene Saiful, हमें पता चलता है secure system क्या हो सकता है. The only system which is truly secure is one which is switched off and unplugged, locked in a titanium case, buried in a concrete bunker, and is surrounded by a nerve gas, and very highly paid armed guards are basically securing it.
So from this statement, इस स्टेटमेंट से आपके दिमाग में क्या आता है? Sir, please move your slide. मतलब इट्स नॉट विजिबल टू यू? Sir, first Yes, वाली sir. अब हो गया, अब हो गया. Okay, fine. I think this is a problem with the presentation, I think. Okay, fine. So is it visible now? I will remain as such. Fine. So this is the statement that is showing what is a secure system. If we say, just look at this one, a truly secure system is which is switch off. And what is the use of switch system? Switch off system means if you are in a public domain, if you are using a network, then I cannot say that my system is truly secure. Then what to do? So in simple words, इसका मतलब ये होता है, if you're talking about absolute security, कोई ऐसी security जो full proof हो, वो computers में possible नहीं है. So there is nothing like absolute security here. What we are doing, we are helping others so that they can have some comfort level, so that they can do their normal operations without any worry. But here it's about the digital hygiene, it's about the mental states of a user there that plays a very important role in defining a security here. So what we are doing, we are only trying to build a comfort level so that you may able to do your things properly without any worry there. Now, if you're talking about the security, security costs money. If you have a security, it means I have to pay something, I have to share my resources with your secure software there. And if I am not using this, then I will be ending up paying more. In that case, if there is an attack, then loss will be much more than putting some extra effort on a security there. So objective here, we should allow others to work properly, just to sensitize them so that they can use their system, they can use their mobile phone, they can browse properly and without any worry there. The problem with the presentation. So next slide is visible to you? Yes, sir. Fine. So अब importance of security here, because यहाँ पे क्या है कि we don't have a attacker visible to us, and even we don't know from where he is going to attack us. Fine. Because अब इंटरनेट का मतलब क्या हुआ कि पूरी दुनिया से कनेक्ट है. अब पूरी दुनिया में कुछ स्टेट्स हैं जहां पे हमारे पास साइबर लॉज है, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे कोई साइबर लॉज नहीं है. तो अब वो लॉस जहां पे इस तरह के कोई लॉ नहीं है, वहां पे इन अटैकर्स के लिए पैराडाइज है. Means they will be using those places to launch an attack there. So here, because of internet, you can be anywhere and they can target you or target your system there. So what they will be targeting you, basically they will be trying to snatch your identity. Why they want to snatch your identity? Because in the later case, they will be getting certain monetary benefit. So you can say that what are the risks? Risk is basically identity theft. Your identity can be lost there, or a monetary theft means you will be losing money. Look at the next one, that is a legal ramification. What is this? Here, if you are using an organization and doing something that is not illegal, that is not legal there, as per the cyber laws, then this will be a problem for you and even for your organization there, because I am unaware of the cyber laws. So what will happen? I will be doing something without knowing that this is not a legal process there, and still you will be leading to a problem for you and problem for your organization there. And outcome of this can be a sanction and termination if policies are not followed there. Now question is that what are the possibilities of attack, from where there is the more possibility of attack on your system? So generally what we do, we all must be using web browsers.
web browser for accessing internet. I will be using I know that's a instant messaging clients. For example, anybody can tell us what is instant messaging? सिर्फ फॉरेन के फॉरेन जो मैसेज पहुंच जाते हैं 1 to 1 एंड से. Okay, fine. Best example, I think you can say that WhatsApp. You Yes, can yes. say that can be an instant messaging there. Then you have a web applications. What are these web applications? For example, हम अपने मोबाइल फोन्स में जो कुछ एप्स इंस्टॉल कर लेते हैं, that you can see as a web applications. जब हम अपने मोबाइल पे कोई वेब एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो हमसे क्या करना होता है? वी गो टू अ प्ले स्टोर, डाउनलोड द एप्लीकेशन, and then we use this application. But in between, what we do? It asking for certain permission. We grant them. True or not? Yes, sir. Fine. So what Yes. we are doing, we are granting certain permission to them, because we say if we are not granting them, I won't be able to use it. So you have an urgency of a use and you have to agree with them. And this can lead to a problem later on. So why this can be lead to a problem later on? When you install it, it asking for excessive user right. It want to use your camera. It want to use your microphone. It want to see your photographs. It want to see your all the documents that are there, even your access to chat there, making a call there. So these are the privilege. But we can avoid this thing, but most of the time we are basically just in a hurry to install app. Anyhow, app should be installed there. Why to look for all these terms and conditions? Fine. So in some way or the other, I am granting rights to the app there. So what the app can be doing? It can be a useful app, like making just a scanning of copies there. But in the background, it may be sending you data also. Fine. So here, that is why these four things are very important here. Web browser, instant messaging clients there, web application there, and the limit to the user rights. What permission should be granted and what permission should not be granted, it should be handled by you. Because you are the user and the first and foremost attack will be on you only. So I just have to show you a photograph. Is it visible? Yes, sir. Fine. What you can get from this photograph? कुछ समझ में आता है इससे? सर आई थिंक एक वो सिक्योरिटी गार्ड वाला इन्होंने मतलब फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी मतलब खड़ा कर रखा है, जिससे लोगों को लगेगा कि सिक्योरिटी वाला है, बट आई थिंक वो मतलब ह्यूमन नहीं है, मतलब उसका कोई एक्चुअल मेन सिक्योरिटी गार्ड पीछे बैठा सो रहा है. ओह आई सी. हाँ वो Exactly, पीछे sir. बैठा सो रहा है और जी. सामने उसने एक फोटोग्राफ लगा दिया ताकि दूर से लगे कुछ काम हो रहा है. Security is not like this one. Security is a 24-hour service. You have to do it, you have to be vigilant, and you have to take decision based on information that is currently available. Fine. अब इस तरह से काम नहीं चल सकता. So that is just a picture to show you. Security is not just a notion. It's basically a service that has to be done at every instant of time. So next is about the how they are basically able to hack our system. कैसे वो एक दूसरा आदमी कहीं बैठा हुआ हमारे ऊपर हैक कर लेता है, कैसे हमारे सिस्टम पे वो अटैक कर देता है. तो मतलब दे आर वर्किंग ऑन अ ह्यूमन साइकोलॉजी. फाइन. साइबर क्रिमिनल्स टेक एडवांटेज ऑफ यूजर ट्रस्ट, आपका भरोसा. देन फियर, आपके अंदर किसी बात का डर है. ग्रीड फॉर समथिंग or some plain old human errors there. So basically they are working on these things. User trust means आपके पास कॉल आती है आपके दोस्त की, या आपके पास कॉल आती है व्हाट्सएप में जिसकी फोटोग्राफ आपके दोस्त की है. फाइन. वो आपसे कहता है कि हमें इमीडिएटली 1 लाख रुपए चाहिए.
यहाँ बिना सोचे समझे आप क्या कर सकते हैं, हो सकता है पैसा ट्रांसफर कर दे, तो दिस कैन बी ए केस ऑफ अ ट्रस्ट, क्योंकि आपको अपने दोस्त के ऊपर बहुत ट्रस्ट है, पर इस ट्रस्ट पे आपने ओवरलुक करा कि वो व्हाट्सएप कॉल कर रहा है, क्या उसका नंबर वही है, सिर्फ फोटोग्राफ से काम नहीं चलेगा। सिमिलरली नेक्स्ट इज अबाउट द फियर, दे कैन वर्किंग ऑन योर फियर, आपके अंदर कोई डर है, लेट्स टेक दे कमिंग विद अ कॉल फ्रॉम सीबीआई ऑफिसर दैट योर सन, your daughter or your relative has been a CBI custody and the call is from some CBI officer, आपके कह सकते हैं ट्रू कॉलर भी दिखा रहा है फोटोग्राफ में, वो पुलिस ऑफिसर है और उसके नोटेशन में भी पुलिस ऑफिसर दिखा दे रहा है, तो दे कैन बी अ फेक कॉल्स जस्ट टू क्रिएट अ फियर इन यू सो दैट यू कैन गेट इन दैट ट्रैप। और कुछ केसेस में हो सकता है ग्रीड, ग्रीड मतलब they are giving you some monetary benefits, some reward, something of that sort, so that you can give them give them your personal information there. So these can be different possibilities for attack, means either they will be using your trust, using your fear or greed or some kind of a human errors there. Fine. अब क्वेश्चन आता है कि इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए आपकी डिटेल्स चाहिए, आपके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी, वो इंफॉर्मेशन वो कैसे लेंगे, तो सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ दे आर गोइंग टू स्टील योर आइडेंटिटी, हाउ दे आर गोइंग टू स्टील योर इंफॉर्मेशन देयर। सो हियर व्हाट वी आर डूइंग, we are basically doing cyber awareness training for users so that they can stop phishing, आप उन अटैक को समझ सकें और उन अटैक से बच सकें, टू अवॉइड रिस्क ऑनलाइन, आप कभी ऑनलाइन हो तो उन चीजों से इस चीजों बच सके, और कुछ हम प्रैक्टिसेस करें जिसके मारे हमारा सिस्टम सिक्योर रहे, so that we can have a better option and better security here. Now question is that why all these things are important for us. So if we look this, why it is important for us, because it's a digital age. इंडिया की हम बात करते हैं तो हमेशा बात कर रहता है कि डिजिटाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स देयर, इन डिजिटल इंडिया देयर, सो एवरीथिंग इज ऑन अ online there, you have to fill form online, you will be using online, so I have to be there. So here world is getting more digital, each and every day all the services are basically available online and you don't have to go anywhere, and all the services are available at your hand with your mobile phone. So here we're talking about the business, banking, healthcare, even marketplace, it's all available on your mobile phone there. So crime is also basically following the same trend. So जो अब आपको बंदूक लेके आपके पीछे नहीं लगे हुए हैं, वो अब आपकी आइडेंटिटी के पीछे लगे हुए हैं. So here the crime is following the same trend. So worldwide ransomware attacks, उस जगह पे वो आपके ransomware से आपके सिस्टम को हैक करते हैं, then they will be getting a money from it. So high profile hack news, you must have heard about this one. They target a specific person and able to grab money from them. Phishing emails, have you heard about this phishing emails? Phishing emails. Yes, sir. Yes, They are sir. like, again, they are like a traps. They are basically sending you email. इसको email को हम extend करते हैं. We also call it as a smishing. It's a SMS. जब हम SMS भेजते हैं तो इसको we call it as a smishing. उसमें हम कुछ लिंक्स भेज देते हैं, कुछ अटैचमेंट भेजते हैं, उसके बेसिस में आपसे डेटा को कॉपी करेंगे या आपको वायरस या एंटीवायरस, आपको वायरस या ट्रोजन हॉर्स आपके सिस्टम पे इंस्टॉल करे जाएंगे. और कुछ चीजें नहीं हो रही हैं. न्यू प्राइवेसी लॉज, न्यू प्राइवेसी लॉज हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत टाइम पे हम ऐसे काम करते हैं जिसको हमें खुद नहीं पता होता, वो हो सकता है साइबर क्राइम की कैटेगरी में आ जाए. फॉर एग्जाम्पल, कभी आपने कोई मूवी डाउनलोड कर ली और वो मूवी कॉपीराइट से प्रोटेक्टेड है, आपने कॉपी करके अपने सिस्टम पे रख ली, इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल थी, इसमें कोई आपने क्राइम किया? नहीं. नहीं. पर आपने प्रोटेक्टेड मूवी को डाउनलोड करके अपने हार्ड डिस्क में रखा. दिस इज ऑल्सो अ साइबर क्राइम इन टर्म्स ऑफ लॉ. तो ये चीजें हमें होता है कि हमें पता नहीं है कि हमने तो कोई गलत काम करा नहीं, ना तो हमने किसी के पीछे पड़े, वो इंटरनेट पे अवेलेबल थी, हमने इसको डाउनलोड करा रख लिया. पर दिस कैन ऑल्सो बी अ क्राइम, क्योंकि किसी का
लॉस हुआ, वो कॉपी आपने डाउनलोड करी, आपने फ्री में देखा, तो किसी का कॉपीराइट का लॉस हुआ, ही कैन चैलेंज इट एंड इट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर द पर्सन हु इज बेसिकली होल्डिंग अ कॉपी ऑफ इट। देखिए, आपने कॉपी नहीं बनाई ना, आपने डिस्ट्रीब्यूट करी, you have downloaded and use it again, or even you haven't seen it, you just download it and save on your system, still it's going to be a cyber crime. So why should user care about that cyber security there? So in this case, what we can say that online world is interconnected, means when you switch on data from your mobile phone, when you connect to a internet through a laptop, computer, desktop, anything there, na? Fine. You are now connected to the internet. Internet means connection of networks. अब आप एक नेटवर्क पे नहीं है, अब आप किसी भी चीज को जो अवेलेबल है आप उसको देख सकते हैं, पर कोई दूसरा भी आपको देख सकता है. Fine. So here, when you are online, your data is on, you are connected to internet, others can also see you. Fine. Now, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है? Now, suppose we are from AMU and you are some from other institutes also. Fine. So I will be using AMU network. From this, I am connected to internet. But if I am making a mistake, if I am overlooking certain threads there, उसको हम ignore करते हैं. What happening? I am basically compromising my security, but I am also compromising security of my institution also. ये कैसे होगा? भाई, हमारा सिस्टम हैक हुआ तो हमारा एमयू का नेटवर्क हैक होने का क्या मतलब? बिकॉज नाउ दे हैव एक्सेस टू द नेटवर्क. वो आपके सिस्टम तक एक्सेस नहीं कर रहे, अब वो पूरे नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव नाउ एंटायर पिक्चर व्हाट इज द इंटरनल नेटवर्क. नाउ दे मे बी यूजिंग योर सिस्टम फॉर लॉन्चिंग अटैक फॉर अदर्स कंप्यूटर्स और अदर सिस्टम ऑन योर internal network. Fine. So there is a possibility. So means care is required for us. If we are part of institution, still we have to be very careful. By mistake, what will happen? Others may become in danger, and if others make mistake, we can also be in danger. So criminals, what they do? They target personal accounts and data to breach corporate ones. So means अब कॉर्पोरेशन को, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, उसको हैक करना है. फॉर दिस दे में भी कॉर्पोरेशन में मान लीजिए 100 आपके एम्प्लॉय है, 200 एम्प्लॉय है, अगर एक भी एम्प्लॉय का हम सिस्टम हैक कर लेते हैं, दिस कैन बी अ वेरी हेल्पफुल फॉर हैकर टू हैक द एंटायर नेटवर्क, यूज दैट सिस्टम, यूज दैट अकाउंट फॉर एक्सेसिंग ऑल द रिसोर्सेज विद इन दैट नेटवर्क देयर. तो ये जो चीज है सिक्योरिटी, सिर्फ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे फैमिली के लिए, ये हमारे कलीग्स के लिए, ये हमारे इंस्टीट्यूट के लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है. हमारी एक गलती हो सकता है इन सब के लिए डेंजरस हो जाए. तो फ्रॉड एंड आइडेंटिटी थेफ्ट डोंट जस्ट अफेक्ट एन इंडिविजुअल, इट कैन अफेक्ट यूजर अकाउंट्स बिलोंगिंग टू योर फैमिली, फ्रेंड्स, कोवर्कर एंड बिजनेस. तो ये हमें पॉइंट करना चाहिए. हम अपने आप को सिक्योर करेंगे तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर कर रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर को सिक्योर कर रहे हैं, और अपने कोवर्कर्स को, और इवन माय ओन ऑर्गेनाइजेशन. तो दिस इज अ सर्विस. जस्ट बाय मेकिंग वी आर अटेंटिव, वी आर सर्विंग अदर्स आल्सो. जस्ट आपको एक स्लाइड दिखाना चाहते हैं जिसमें आपको अंदाजा होगा व्हाट्स द प्रॉब्लम है. So if you look at this one, this is a denial of service attack. You must have heard, आपने सारे बहुत से अटैक्स पढ़ लिए होंगे. So this is your denial of service attack. What is in this case? Look at the top. Here, a person is basically hacker. What he is doing, he is basically hacking different individual computers. वो किसी का लैपटॉप हो सकता है, किसी का मोबाइल फोन हो सकता है, किसी का जो है डेस्कटॉप हो सकता है, या और कोई सी चीजें जो कंप्यूटर से कनेक्टेड है. फाइन.
वो अब अटैक करने के लिए आपके कंप्यूटर को यूज कर रहा है, अटैकिंग सम गवर्नमेंट सर्विसेज, सम इंस्टीट्यूशनल सर्वर देयर और कोई। तो अब ये जो हुआ अटैक उस अटैकर के नाम से नहीं आ रहा है, अटैक जो आ रहा है वो इंडिविजुअल यूजर्स के नाम से आ रहा है। योर ईमेल आईडी, योर आईपी एड्रेस इज बेसिकली रिवील टू द ऑर्गेनाइजेशन। अटैकर इसमें इनविजिबल है बिकॉज ही इज यूजिंग योर सिस्टम फॉर लॉन्चिंग अटैक। वो आपके सिस्टम को यूज कर रहा है दूसरों के ऊपर अटैक करने के लिए। I think this you must have already discussed before in some classes. So are you aware of active and passive attack? Yes, sir. Fine. So can anybody define what is a passive attack and why passive is an attack? सब पैसिव अटैक में वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है, काफी दिन तक ट्रैक करता है, और उसके बाद जब इंफॉर्मेशन उसके पास इनफ हो जाती है तो उसके बाद फिर वो जो है पर्सन को टारगेट करता है सर तरह से। वेरी गुड। एक्चुअली एक्टिव अटैक ऐसा अटैक है जो आपको फौरन पता चल जाता है, यू गेट एन आइडिया दैट यू आर अंडर अटैक। बट पैसिव अटैक हो रहा है इसका हमें पता ही नहीं चलता। और एक्चुअली द पैसिव अटैक इज बेसिकली प्रीकर्सर टू एक्टिव अटैक। वो अभी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है आपके बारे में, आपके सिस्टम के बारे में, आपके नेटवर्क के बारे में। एंड व्हेन टाइम इज राइट, जब अटैक का बिल्कुल सही समय होगा, जब मैक्सिमम बेनिफिट होगा, वो ये सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके आपके ऊपर एक्टिव अटैक करेगा। तो हियर वी क्लासिफाई देम एज अ पैसिव। पैसिव से आपको इमीडिएटली कोई नुकसान नहीं नजर आ रहा, बट दिस इज अ स्टार्टिंग स्टेप ऑफ अ एक्टिव अटैक। So next is, I just told you what is a cyber crime. So I just have a definition of a cyber crime here. So what is this cyber crime? Cyber crime is any activity, कोई ऐसी activity that involves a computer, network or a network device. So computer, नेटवर्क एंड नेटवर्क डिवाइस। अब नेटवर्क डिवाइस में हम बहुत कुछ चीजें देख सकते हैं, उसमें मोबाइल फोन भी रख सकते हैं, राउटर्स भी डाल सकते हैं और लॉट्स ऑफ थिंग देयर। व्हाट इज द पर्पस? टू जनरेट प्रॉफिट। सबका आखिरी मुद्दा होता है मॉनेटरी बेनिफिट। सो अटैक का मेन इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट्स अ मॉनेटरी बेनिफिट। कुछ केसेस में कुछ और भी उनके अपने उसके होते हैं, उसके मतलब अपने पर्पस होते हैं। अगेन this attack is against computer or devices, directly damaging them or disable them. का पर्पस क्या होगा? उसको डैमेज करना या डिसेबल करना। डैमेज डिसेबल पर्पस क्या हुआ? कि दे वांट दिस सर्विस टू नॉट टू बी अवेलेबल टू normal users there. So they will be using computers and networks to spread malware, illegal information, images and other material there. So what they do, they both target computers to infect computer with computer virus, then using these computers to do more attacks or attacking some other networks there. So the primary effect of cybercrime is financial. Fine. कुछ जगह पे वो आपकी मतलब इस टाइप का रेपुटेशन का लॉस भी यूज करा जाता है। किसी जानबूझ के इसकी रेपुटेशन को खराब करना है, देन देयर इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी ऑफ साइबर अटैक, बट मोस्ट ऑफ टाइम इज बेसिकली अ money that is behind this cyber attack there. So cyber crime can include many different types of profit driven criminal activity. So it can be a ransomware attack, email or internet fraud, identity fraud, as well as attempt to steal financial account, credit card and other payment for information there. Now next is about the categories. So if we just try to define what are the categories of a cyber crime,
So if you look at that, as per the Department of Justice of United States, that is America, cybercrime involves the following three categories. These are crimes in which computing device is the target. वो जहां पे हम अटैक करते हैं किसी कंप्यूटर के ऊपर या किसी कंप्यूटिंग डिवाइस के ऊपर, then we say that this is a crime there. Look at the second one. Crime in which computer is used as a weapon. मीन्स यहां पे किसी का कंप्यूटर को दूसरे अटैक को लॉन्च करने के लिए यूज करा गया, then this is also a crime there. Means I am not using my computer or using somebody else's computer for launching attack, then again this is a cyber crime there. So in the last case, crime in which computer is used as an accessory. मतलब इसमें कंप्यूटर पे अटैक नहीं करा गया है, कंप्यूटर को अटैक के लिए यूज नहीं करा गया है. In that case, it is using for storing illegal data obtained. So I talk about when हम फिल्म को डाउनलोड करके अपने हार्ड डिस्क में रख लिया, then again this can be seen as a cyber crime there. So the other definition I'm not going to talk about. So let's take who are the perpetrators. कौन साइबर क्रिमिनल्स होते हैं? So साइबर क्रिमिनल होते कौन है? मतलब वो जैसे हमारे जैसे कुछ लोग होते हैं. साइबर क्रिमिनल्स means individual or group with relatively little technical skills. So इनके दो तरह के ग्रुप कह सकते हैं. कुछ जो है वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड हैं और कुछ जो है दे आर हैविंग अ लिटिल टेक्निकल स्किल्स. उनके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है बट दे हैव गुड इन सोशल इंजीनियरिंग. Others are highly organized criminal groups that could include skill developers and other with relevant expertise. Fine. So एक ग्रुप क्या है जो टेक्निकली साउंड नहीं है बट स्टिल ही इज अ साइबर क्रिमिनल. एक वो ग्रुप है जो टेक्निकली वेरी साउंड और वी कैन से दैट दे आर एक्सपर्ट प्रोग्रामर and they are basically attacking there. So further reduce the chances of detection. मतलब हमारे पर साइबर अटैक होता है. Is there any problem? Asif sir, please mute your. Is there any problem? जो इस्लाम सर आवाज बहुत खराब आ रही है. आसिफ साहब आवाज बहुत खराब आ रही है. No, is it now it's better? आसिफ सर प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज. हम बंद ये वाला नहीं वो वाला क्लास चल रहा है हम लोग का. आज लास्ट है नहीं AMU से इसमें कोई इस वक्त सबका चल रहा है. लास्ट है प्लीज ऐड वाला कुछ नहीं पता चला आज. यही नहीं कोई बस से नहीं गया ऐड के लिए. तो एनीबॉडी फ्रॉम दैट स्टाफ सर ने रिमूव कर दिए, नहीं तो आपकी बात समझ में नहीं आ पाएगी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. हाँ तो वो RS ले लिया. अरे सर ये जिनके माइक ऑन है इनको प्लीज जो है या तो बोल दीजिए या हटवा दीजिए. समझ में ही नहीं आ रहा कुछ. Is there anybody from staff club? Academy staff club? या MMTC वाले कर सकते हैं वहां से म्यूट. आई थिंक उन्होंने लेफ्ट कर दिया है. आसिफ साहब लेफ्ट कर चुके हैं. Fine. We should continue. लेफ्ट कर दिया सर, लेफ्ट हो गया उनका. जी मैं बोलता हूँ अभी. Fine. So we should continue. Yes, Now, yes. who are these cyber criminals? अगर हम इनकी साइबर क्रिमिनल्स को क्लासिफाई करें तो we can find it two different groups. One with a good technical skills, other with a very little technical skills. Fine. अभी आपने सुना होगा कुछ यहाँ पे जामतारा और नू, मथुरा, भरतपुर. Cyber criminals are basically working from this location. They are not that much technically skilled, but they are skilled in speaking, skilled in convincing you. Fine. So again, they are cyber criminals.
they are using the services of other cyber criminals there. एक वो ग्रुप होता है जो highly skilled है, fine, they are the very good programmers, they have basically aware of all technical details there, how to hack there, so they are providing services to others. So there two different groups are there. So you most of the time when talking about the cyber crime, we are dealing with this little technically skilled groups. वो हाईली हमसे ज्यादा कभी हमारे सामने नहीं आते, जो हमसे डील करते हैं वो आमतौर से लिटिल टेक्निकल स्किल्स वाले डील करते हैं. Means they are, because and that is why it's possible for us to detect them and to stop their activity there. So और next चीज क्या होती है कि now the word is as computer is connected, so they can basically go to any country, use VPN and access to their service from other countries there. So here they will be using countries with weak or non-existing cyber laws there. What is going on? So how cyber crimes work? So let's try to see it. Cybercrime attacks can begin whenever there is digital data. जहां पे डिजिटल डेटा अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटी है, मोटिव है, साइबर क्राइम कहीं पे भी हो सकता है. साइबर क्राइम इंक्लूड्स एवरीवन फ्रॉम द लोन यूजर एंगेज इन साइबर बुलिंग, एक सिंगल यूजर किसी को बुली कर रहा है ऑन द देयर, और टू अ स्टेट स्पॉन्सर एक्टर. सो एक वो आदमी जो इंडिविजुअली काम कर रहा है किसी खेत से, किसी गांव से, किसी झोपड़ी से, और दूसरा वो हो सकता है जो देश की इंटेलिजेंस सर्विस के लिए काम कर रहा है. ये दोनों ही काम कर सकते हैं. Cyber crime generally do not occur in vacuum. They are in many ways distributed in nature. वो कई और लोगों की सर्विसेज यूज करते हैं. So let's come to this point. Just I have to show this thing. So here we know about the internet, fine. But when we're talking about the internet can be divided into three different parts: surface web, deep web, and dark web. So have you heard about this deep web and dark web before? जैसे हम लोग आजकल इंटरनेट यूज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? We use Google there, Facebook's there, we go on to find certain website there, Amazon.com there, fine. वो ले गया. तो ये सब चीजें सरफेस वेब. अब इसके बाद ये दिस इज एक्सेसिबल टू अ नॉर्मल यूजर. बिफोर this is only, we can say that 10 to 15% of total internet. इसमें तो इसमें भी रखा, मैंने कहा इसमें रख देना. इसको स्टॉप करने का तरीका नहीं है. राजेश भाई आपकी आवाज आ रही है. भाई इनको बंद करा दीजिए प्लीज, बीच बीच में बोल रहे हैं ये. राशिद भाई अपना माइक बंद कर लिया अगर आवाज आ रही है तो आपको. भाई किसी के पास नंबर हो तो इनको प्लीज कॉल करके बोल दीजिए कि अपना माइक ऑफ करके बात भाई करें. बंद कर लिया उन्होंने. ठीक. कंटिन्यू. सो नाउ ट्राई टू गेट दिस आइडिया. जो हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं नॉर्मल इंसान, वो सरफेस वेब यूज करता है, एंड दिस इज ओनली अ पार्ट ऑफ इंटरनेट. इससे सबसे ज्यादा मींस अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% and net is not visible to us. What they are doing, they are providing certain services. For example, in case of net banking, you have some medical records there. और उसके बाद एक और नेट होता है जिसको we call is a dark web. यहाँ पे डार्क वेब जो है ये एक स्पेशल तरह का राउटर होता है. We call is the onion router. उसकी चीजों के उसके नीचे आपकी आइडेंटिटी छुपी होती है. किसी को नहीं पता चलता कौन यूजर है और कौन बायर है, कौन सेलर है. सो दिस इज द एक्चुअल वेब दैट इज यूज्ड बाय द हैकर्स. अब इसको हैकर कहना कि तो गलत है, क्योंकि ये सरकारें भी यूज करती हैं, ये एजेंसीज भी यूज करती हैं. सो बट मोस्टली दे आर एक्सप्लॉइटेड बाय हैकर्स देयर, क्योंकि वहां पे कोई अपना वायरस बेचेगा, कोई अपना इलीगल सामान बेचेगा, इसका पता किसी को नहीं चलेगा, क्योंकि एवरीथिंग नाउ इज एनोनिमस. नोबडी विल बी नोइंग द आइडेंटिटी. सो ये सारी जो इंफॉर्मेशन आती हैं कि इलीगल ड्रग सप्लाई, इलीगल वेपन्स देयर,
all of these basically are done under a dark web there. तो अब ये आप लोगों जैसे बताया था आपको बहुत से थ्रेड के बारे में पता है. So we just listing these threads here. So here when talking about the threads there, it can be a phishing or it can be a spear phishing, social engineering scams, common malware and ransomware, some business email compromise, fake website that steal data from or infected devices there, and many more. So this is not the exhaustive list. You can add lots of things to this one. So I'm just try to show you because you're aware of phishing. So look at this page there. So this is a page, and this is basically mail that you are getting. Suppose a user is of my university network there, then what will happen? It will showing that your password will expire in 1 day. Fine. So what it is basically giving a feeling of fear. My password is going to expire from here. I must have done some mistake there, so I should correct. And in this case, it's providing some link there. So it's asking you to update this information. So can you trust this mail? No, sir, never. How can you say that this should not be trusted? What should be the reason? सर इनका सोर्स जो है उसको हम पहले वेरीफाई करेंगे कहाँ से आया है, जैसे कि हम लोगों ने पहले. Very good. We have to verify source. Can you verify this source? Yes, sir. सर कैसे पता चलेगा ये सोर्स जो है वो फेक है? सर माय यूनिवर्सिटी के नीचे टू मी लिखा हुआ है, वहाँ पे वो ड्रॉप डाउन लिस्ट टाइप की आती है ना, तो वहाँ पे लिखा, वहाँ से हमें पता चल जाता है कि कहाँ से हमें मैसेज भेजा गया, ईमेल भेजा गया, वहाँ से डोमेन पता चल जाएगा. तो उसका सो अगर देखिए अगर यहाँ पे आपका अपना डोमेन है, लेट्स टेक वी हैव अ amu.ac.in. If mail is coming from amu.ac.in, then आपका डोमेन नेम कॉमन होना चाहिए. But here what we do, if we try to check it out, we will find that this mail is coming from different domain. अगर उसके if this can give you a idea and this can be a fake. Now question is that, let's forget about this one. If somehow I click upon this link, then what will happen? सर हम वो जो मतलब जो भी हैकर्स हैं या जिन्होंने भी हमें मेल भेजा है, हम एक तरह से उनकी सराउंडिंग में आ जाएंगे और उनके ही बताए हुए रास्ते में चलते जाएंगे. हमने क्लिक कर दिया, अब वो हमसे हमारी पासवर्ड वगैरह इन्फॉर्मेशन मांगते जाएंगे. अच्छा अपना नाम बताइए, अच्छा ये बताइए, अच्छा ये बताइए. मुझे लगेगा होने का प्रोसेस है, हम बताते चले जाएंगे. फाइन फाइन, वेरी गुड. इस पे क्लिक करेंगे, इट विल आस्क योर लॉगिन एंड पासवर्ड. पेज आपका बिल्कुल सेम दिख रहा है जैसी आपकी वेबसाइट का पेज दिखता है. यू मे प्रोवाइड इट. नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हेन यू आर डूइंग दिस थिंग ऑन अ लैपटॉप एंड व्हेन यू आर यूजिंग दिस ऑन अ मोबाइल फोन, देन देयर इज अ मेजर डिफरेंस. लैपटॉप पे तो क्या होता है कि हमें एड्रेस बार दिखता है, वहां से हमें पता चल जाता है कि ये लिंक क्या है. पर मोबाइल फोन पे जनरली वो छोटी स्क्रीन साइज होती है. Address bars are not visible to us. Address bar is not visible to us. See, we won't be able to see these details. So mobile phone पे ये सब चीजें और dangerous हो जाती हैं क्योंकि वहां पे स्क्रीन साइज छोटी है. We have to strain our eyes. We won't be able to see more details there. Then there is a more possibility of attack on mobile phone there. So अगर यही मेल हम ब्राउजर पे खोलते हैं on a laptop, then there is a possibility that I may detect it. But when I open it on a mobile phone, then I have a less possibility of detecting it. So if you look at the statistics there, I just have one more slide to show you. If you look at the statistics here, what does it reveal here? So if you look at this one, अगर इस तरह की ईमेल 6 लोगों को भेजी गई तो चांसेस है इन 6 लोगों में से 80% कि कोई ना कोई इस पे क्लिक कर देगा. Means you are intelligent, you are attentive, you may able to detect that this is not your correct email ID. But
among 6 एक तो है जो इसको क्लिक कर देगा, एंड इट्स देयर वर्क इज डन. अगर हम इसको देखिए, इफ यू इंक्रीज इट, आई एम सेंडिंग इट टू 12, 14, 16, 18, then there is a 100% possibility that at least one click must be there. So phishing means it's sending to lot of, if there is one user, one careless user, their work is done. Fine, they have achieved their objective there. Then they will be using this information for launching more attacks there. Fine. So here look at this one. This is just a spamming. वो स्पैम की तरह भेजते हैं, ज्यादातर लोग रिजेक्ट कर देंगे, पर उनको एक आदमी चाहिए. So they are basically having some advantage of basically one click. और वो गलती से भी हो सकती है. We just open an email and it may possible that we may do a click by mistake here. So next is how to recognize it. I think so. How to recognize and report phishing there. So look at this. If you are unable to decide, just look at this. What is the tone of a message? If a tone of message is urgent and make you scared, आपको वो जल्दबाजी और डराने की कोशिश करे, then there is a possibility of phishing attack there. So click this link immediately or your account will be closed. On mobile phone, आपके पास ये सिम यूज हो रहा है, ये फोन का आपका सिम कुछ दिन में बंद कर दिया जाएगा. Otherwise, you just call to this landline number or call to this number there. Fine. Or look at this one. In the second point, sender email address does not match the company is coming from it. Suppose आपके पास email आ रहा है amazon.com से, पर वो देखिए Amazon में O की जगह 0 लगा हुआ है. Then there is also a problem there. Means it's a fake domain. उसने कोई डोमेन क्रिएट करी है जो जेन्युइन नहीं है, just to camouflage there. वो उसको लगे कि ओरिजिनल जैसा है, पर वो ओरिजिनल नहीं है. So here unexpected communication such as email you are not expecting. आपको एक रिवॉर्ड की ईमेल आ जाती है, पर रिवॉर्ड कहां से आ रहा है आपको पता नहीं. आपके पास कोई इंसेंटिव आ रहा है, पर वो इंसेंटिव क्यों आ रहा है आपको पता नहीं. In that case also make a feeling of this is going to be a phishing email there. Next, request to send personal information. अब now ये तो चीज क्लियर है कि no legal organization is going to ask you personal information. If anywhere you find that they are asking for personal information, don't disclose it. Make it assume that this is that you are under attack, and this is basically a possibility of taking your identity there. So कुछ जगह पे अब you find that spellings are incorrect, grammar is not good, URL is not basically somewhat that is unexpected line. In that case also this can be a phishing attack there. So here what we do, look at the tone, look at the domain name, look at that it is asking for personal information or not. If somebody is asking for personal information, its goal is not to help you, but has to some other thing or some sinister design for on you. If you are getting an email that is not properly framed, so probably this is not coming from some institution, some organization or company, because they must be having some extra care, making it a proper and more informative there. So if you detect that this is a phishing, then what to do? Never click. Don't click any link that you don't trust. Delete that email or text that. So don't click any attachment you were not expecting or recognize. जहां पे आप श्योर नहीं है ये ईमेल अटैचमेंट जो है वो मेरे किसी एड्रेस बुक से या किसी जानने वाले ने भेजा है और उसको आपको नहीं समझ में आ रहा, तो डोंट ओपन दैट थिंग. So never send your personal information over phone or through an email there. Then what you can do, you can verify the communication is real and contact the sender. अगर आपको डाउट है, maybe your friend is in problem, मेल आपके फ्रेंड के नाम से आई है कि फ्रेंड के ईमेल से आईडी है, so don't reply on an email. Ask, call your friend, then check it out, is he has sent your email or not.
और उसको भी बता दीजिए अगर वो ईमेल उसने सेंड नहीं करा है, देन योर अकाउंट इज प्रोबेबली इन अ danger there. So report if you have been a part of department there, then report your that's a IT manager there. Report it to your department or email the email to the email provider there. So you can also use email filters. वैसे अब Google बाकी सारी email ID they are providing you some email filters. They basically separate in the form of spam and junk mails there. If you are not sure, simply delete it. You don't do anything. So I'm just skipping. I think malware, you are aware of it. So I'm just skipping it, but I'm just going to try to give you how they reach to your system there. So here, how malware means virus, antivirus, ransom can reach to your system there. So look at this one. In case when you connect to normal website, अब normal website है आपका data, let's take ndtv.com और some let's take rediffmail.com, उस पे कुछ एड्स आते हैं. अब एड्स का तो उनको पैसा मिलता है, तो दे विल बी पुटिंग एड्स देयर, बट क्वेश्चन इज दैट एड कैन बी मैलिशियस. मैलिशियस मींस दे मे बी डायरेक्टिंग ट्रैफिक टू देयर ओन सर्वर देयर. मींस appear to be very good thing, मतलब आपके हो सकता है कि आप जो चीज खरीदना चाहते हैं उसका ऐड आ रहा है, you just click it on, you just try to see a detail there, but what will happen? They will direct it to their own server, and through this they will be able to install some ransomware, Trojan or virus worm on your system there. This is about the normal website. So normal website में आप जो मेल्स देख रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं. अब वो वेबसाइट जो खुद ही कॉम्प्रोमाइज हैं, जिनके ऊपर ऑलरेडी अटैक हो चुका है, अगर आप उनको एक्सेस करते हैं, देन यू आर इन मोर डेंजर. Fine, because they are compromised, all data they are going to provide, it will be basically used to exploit your vulnerabilities and installing a software on it. Or you will be clicking a link that is coming to your phishing mail. Again, they will be able to get access to your system, able to exploit your system, and able to install a piece of a software on your system, Trojan horse, it can be a virus or it can be a worm there. So have you heard about this adware, advertisement? So here adware is very common. Ads are there on the web pages, but in this case adware, there is a possibility that it may be installing a malicious software or some spyware. Spyware means it is collecting your data. It's not installing any Trojan horse or virus on your system, but collecting your data, sending it to their server so that more ads can be displayed on your system there. I think you must have already studied about this antivirus and spyware, so I'm just skipping it. Now I'm coming to a important one, that is identity theft. So what is this identity theft and how it is important? सर आइडेंटिटी थेफ्ट मीन्स कि वो हमारी पहचान चुरा लेते हैं, मतलब हमारे नाम से एक और ईमेल आईडी बना लेना या हमारे नाम से फेसबुक पे एक और अकाउंट बना लेना. इट मींस कि वो आइडेंटिटी थेफ्ट नहीं है, दिस इज इम्पर्सोनेशन. आइडेंटिटी थेफ्ट इज डिफरेंट. इट्स बेसिकली स्टीलिंग योर प्राइवेट डेटा. फॉर एग्जांपल, योर डेट ऑफ बर्थ, your mother's name, your father's name, your mobile number, your car number, your son or daughter's nickname, their date of birth. So they are basically collecting your private data there. Fine. So here, impersonation by private information. Fine. So basically they are using your real data. And using that real data, they may be able to hack your system or they may be able to cheat somebody else. Fine. So here, how this information can be stolen there. First is shoulder surfing. Have you heard about this word shoulder surfing? Let's take it. You are basically logging into your computer. आप कंप्यूटर पे लॉगिन कर रहे हैं, कोई पीछे खड़ा है. वो आप क्या लॉगिन कर रहे हैं, किसमें लॉगिन कर रहे हैं, क्या वैल्यू डाल रहे हैं, क्या पासवर्ड डाल रहे हैं, वो सबको देख रहा है. जस्ट सिटिंग बिसाइड यू
or standing at the back of you and able to see the computer, able to see your mobile phone screen, and they are basically reading data from it, remembering it, and then it will be using it. Suppose उस टाइम पे आपने SBI अकाउंट में लॉग इन करा, तो वो आपका पासवर्ड और यूजर आईडी उसने दोनों देख लिया. फाइन. तो दिस कैन कम अंडर द शोल्डर सर्फिंग देयर. स्नैगिंग वो लोग समझ सकते हैं जिनको बिल्डिंग मटेरियल्स और बिल्डिंग के बारे में पता है. मींस दे आर ट्राइंग टू फाइंड सर्टेन flaws in the software, flaws on your system, so that they can use it. Then there is a dumpster diving. What is this? They will be getting your data from your garbage. अब इसका क्या मतलब हुआ? Means what we do certain calculations, we do certain writings, then generally we tear it off, फाड़ देते हैं उसको डस्टबिन में डाल देते हैं. उस डस्टबिन में डाले हुए डेटा को बाहर फेंक दिया जाता है. अब उस डेटा से भी क्या हमारी आइडेंटिटी को चुरा सकते हैं? बिल्कुल सर कर सकते हैं. फाइन, वी कैन, बिकॉज दिस इज अब यहाँ पे कंप्यूटर इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स है, हैंड रिटन इंफॉर्मेशन है. फॉर एग्जाम्पल, आप फोटो कॉपी कराने गए अपने आधार कार्ड को, आधार कार्ड की आपने फोटो कॉपी कराई, जिसने पर फोटो कॉपी करी उसने 2 करी, एक कॉपी आपको दे दी, एक अपने पास रख ली. वो एक कॉपी का तो आपसे 1 रुपए ले रहा है, पर दूसरी कॉपी का किसी और को देने के लिए वो हो सकता है 5 रुपए ले रहा हो. फाइन. तो दीज आर द डिफरेंट चीजें. अगर हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हमारे पास बोर्डिंग पास होता है. व्हाट वी डू विद द बोर्डिंग पास आफ्टर लीविंग द एयरपोर्ट? जनरली उसको फेंक देते हैं. पर होता क्या है कि दिस इज ऑल्सो कंटेनिंग लॉट्स ऑफ माई पर्सनल इंफॉर्मेशन. वो हमारी बहुत सी पर्सनल इंफॉर्मेशन पे होती है. इफ somebody is able to access my boarding pass, he may be able to get lots of detail about my private life. What is my name, what are details there, what are Aadhaar number, उसमें स्कैन करके हमें बहुत सी चीजों को वो ढूंढ सकता है. तो दैट इज अगेन अ पॉसिबिलिटी देयर. नेक्स्ट इज अ सोशल इंजीनियरिंग. व्हाट इज दिस सोशल इंजीनियरिंग? सर आई थिंक सोशल इंजीनियरिंग में वो पर्सन मतलब जो टेक्निकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, बट वो हमारे इमोशंस के, हमारे फीलिंग्स को अच्छी समझ लेते हैं. उसका भी इंफॉर्मेशन पर्सन ले लेते हैं सर बातों में. हाँ, वो बातों से आपको मतलब आपको आपका डेटा देते हैं. जी, वो आपको बातों से कन्विंस कर लेंगे कि जो कह रहे हैं वो सही है. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके घर में फोन आता है कि आपके फादर का एक्सीडेंट हो गया है, उनको हमने इस हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया और उन्होंने हमको अपना डेबिट कार्ड दिया हुआ है कि ताकि जो है पैसा निकाल के हॉस्पिटल में जमा कर दें. तो वो फोन कर कहते हैं कि आप हमको जो है या तो आप आके इनका पैसा निकाल के दे दीजिए और या हमें पिन बता दिए ताकि हम पैसा जमा कर दें. उनकी हालत बहुत खराब है. अब ऐसा कोई भी हो सकता है जिसके फादर घर पे ना हो और उसके पास ये कॉल जाती है, मे बी एबल टू टेल द डेटा, मे बी एबल टू टेल द पिन ऑफ योर कार्ड. तो दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी. तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, दैट वी कॉल इट एज सोशल इंजीनियरिंग. वहां पे इमोशंस पे वर्क करते हैं. इमोशन की मतलब वहां पे इंटेलिजेंस नहीं इन्वॉल्व है. दैट इज बेसिकली वर्किंग ऑन इमोशन सो दैट यू मे रिवील योर पर्सनल इंफॉर्मेशन. और नेक्स्ट इज अबाउट द हाईटेक मेथड. अब वहां पे हैकर्स का कमाल है. आपके सिस्टम पे वो लीक ऑलरेडी उन्होंने कुछ इंस्टॉल कर दिया है. आप जो कुछ भी टाइप करेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हैकर के पास चली जाएगी. Then from that information on that data, they will make it out. You are basically logging into your bank account. You are basically logging to your there's a electricity department there. You are logging to your some critical information. उसके basis में वो intelligently उन सब चीजों की information gather कर सकते हैं. तो this we call as a high-end method there. So whenever we lose an identity, means I will be losing my privacy. So use personal information that we are stored electronically basically has been lost. So these information basically are sold to others. जैसे आपने कहा, जैसे आपका आधार कार्ड किसने फोटो कॉपी करके दूसरे को बेच दी,
तीसरे ने उसको खरीदा क्यों, तीसरे ने आपका डेटा खरीदा क्यों नहीं? क्योंकि उसको जो है either he has to do a business or it may be used for further attack there. So that can be a problem there. So public records of the internet, अब जैसे हमारा डेटा कहाँ पे होता है, फेसबुक पे, हमारा डेटा कहाँ पे होता है, व्हाट्सएप पे, और हम बहुत सी जगह पे लॉग इन करते हैं। आधार का हमारा डेटा है, आधार का हमारी आइरिस का डेटा है, आंखों का डेटा है, फिंगरप्रिंट्स का डेटा है, हमारे नेम का डेटा है, फादर का डेटा है, इवन चेंजेस और एड्रेसेस का डेटा है। अगर यहाँ पे भी हैक हो जाए, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन चली गई। और कहीं पे जैसे बैंक में आपने अमेजन में अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डाल दी है, आपने किसी ट्रेडिंग साइट पे, ई कॉमर्स साइट पे अपने डेबिट कार्ड, अपनी यूपीआई की इंफॉर्मेशन डाल दी, अगर वो साइट हैक होती है, इन दैट केस योर पर्सनल डेटा इज ऑल्सो एट डेंजर। अगर हम ये समझते हैं कि हमारा क्रेडिट कार्ड का नंबर हैकर्स को नहीं पता है, देन वी आर इन एरर, ये हमारी गलती है। हमारे क्रेडिट कार्ड का नंबर भी उनको पता है, बट ये होता है कि अभी तक हमारे क्रेडिट कार्ड का यूज उन्होंने नहीं करा। इसीलिए मोस्ट ऑफ टाइम इट इज सेड दैट ट्राई टू चेंज योर पिन फ्रीक्वेंटली, भाई पिन को बदलते रहना चाहिए, ताकि अगर नंबर भी आ जाए तो वो पिन को यूज ना कर पाए। सो व्हेन अबाउट सोशल इंजीनियरिंग, तो सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है? We already talk of, they will be calling you, they will be texting message, they will be email you, they may be giving you a SMS there, और WhatsApp पे भी कॉल कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप कन्विंस होके उनको अपना डेटा विलिंगली देते हैं। एक स्पेशल केस है दैट मोस्ट ऑफ यू मे नॉट बी अवेयर about, that is known as tab nabbing. Now what is this tab nabbing? टैब nabbing, अब तक क्या होता है, इन सब जगह पे यूजर अपना डेटा गलती से देता है, बट टैब nabbing इज समथिंग डिफरेंट। हियर यू आर ऑलरेडी अंडर अटैक, आपके कंप्यूटर पे उसने अपना एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है। व्हेन वी बेसिकली ब्राउज इंटरनेट, व्हाट वी डू, वी क्लिक ऑन अ टैब। लेट्स टेक, हमने अभी देखा gmail.com, फिर थोड़ी देर बाद हमने amazon.com खोल लिया, देन वी गो ऑन फॉर सम अदर सर्चिंग देयर, हमने रिडिफ खोल दिया, उसके बाद हमने कुछ और साइट्स खोल लिए, एक टाइम पे हमने कई टैब्स खोल लिए। तो इज देयर एनी प्रॉब्लम ऑफ ओपनिंग मल्टीपल टैब एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम? तो यू आर अवेयर ऑफ टैब्स, ब्राउजर में टैब्स होते हैं हमारे। यस सर, यस सर, यस सर। अगर एक साथ कई टैब्स को खोलते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम है? एक सबसे सिंपल चीज है भाई, दैट विल बी रिक्वायरिंग मोर मेमोरी, योर सिस्टम में गो स्लो डाउन, बट वो प्रॉब्लम बहुत छोटी है। प्रॉब्लम ये है इफ योर सिस्टम इज कॉम्प्रोमाइज, आपने एक टैब खोला, आप दूसरे टैब पे चले गए, यू आर वर्किंग देयर, यू आर वर्किंग फॉर हाफ एन आवर और मोर, अब आपको खुद भी याद नहीं था कि आपने कितने टैब खोले हैं। अगर किसी एक टैब का कंटेंट बदल दिया जाए और उस पर कोई फिशिंग अटैक कर दिए जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ लुक हियर, इफ आई कैन लुक एट दिस वन, यहां पे क्या हुआ, मल्टीपल टैब्स खुले हुए हैं, यू मे बी वर्किंग ऑन सम अदर टैब्स, लेकिन देखा जाए तो वो ईबे खुला हुआ है, फ्लिपकार्ट है, हिंदू है, टेक क्रश है, तो यू मे बी रीडिंग अ न्यूज, but what will happen in the background, some of your tab start refreshing and new tab may open in place of it. Look at this one, this tab was originally eBay, but because hacker has some software there, what it is doing, it's basically changing the content of one of the tab. अब ये tab आपके सामने खुल गया, now when you come back here, its appearance is same as that of your original tab, so you may able to enter your data again. If you are doing this thing, then you will be passing on your information to the hacker website. So yahan pe look at this one in the slide, content is different, all the tabs are there, so one of the tab is changing. So you have already opened the eBay, so now its IP address or its
domain name is changed, so its appearance is exactly same as that of eBay, so you won't mind, and you will be basically entering up your details there, and what will happen, this detail will pass on. So this can be a major problem there. The question is that how to avoid these type of attack. So how to avoid this type of attack? Look at this one. In this case, you have a Gmail. अब देखिए पर यहाँ Gmail की जगह gmai1.com, more or less appearing to be exactly same as Gmail. अब इसमें यूजर नेम एंड पासवर्ड खुला हुआ है, आपको लगा कि आप जो लॉग आउट हो गए, आपने दोबारा इसमें एंट्री कर दी. So when you enter your username and password, it will take to your fake website, or what it can do, it will redirect it to original Gmail, so that it captures data, and even you will not be aware of that I have missed this, my data has been compromised. So this is the possibility when we are able to or when we are basically using lots of tab during a browsing session there. So how to prevent it? So to prevent it, when you come back to the original tab there, do not enter your data there. First refresh that page, so that you can get an idea what is going on. Then you can check the correctness of URL before you key in mouse and click. So कुछ काम मुश्किल जरूर है, but this can be done. So when you move back to the, अब ये क्या है कि यहाँ पे डेटा देना है, this is a sensitive web page, so better to refresh it and then enter your data and check it that that you have not giving it to somebody else. If you are using financial transaction, अगर आप बैंक का डेटा भी उसमें रखना चाहते हैं तो अवॉइड करिए. डू नॉट यूज टैब ब्राउजिंग. तो आप फिर अब ट्रांजैक्शन करें कैसे? भाई जब हमने कहा आपको पैसा ट्रांसफर करना है एंड यू आर यूजिंग अ ब्राउजर देयर, सो हाउ टू मेक इट सिक्योर. आप कैसे ट्रांजैक्शन करें जिससे आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शन में खतरा मिनिमाइज हो जाए? एनी आइडिया? सर प्राइवेट वाईफाई नेटवर्क से ना. No, I'm not talking about the Wi-Fi. Wi-Fi पे हमें आएंगे. We will discuss it Wi-Fi. I'm just talking about आप कनेक्टेड हैं, आप जो है ब्राउजिंग कर रहे हैं. अब आपको हो सकता है कि आपने कुछ देखा, उसके बाद आपको पैसा ट्रांसफर करना है. Then what to do? Should I using a tab for a browser there? If you have to use a financial services, not to do in a normal tab. Instead, you can use incognito. Have you heard about this incognito? Yes, sir. Yes, Fine. sir. So जहां पे आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप नॉर्मल टैब्स में कभी मत करिए. You try to do a financial transaction in a incognito mode. Incognito mode का फायदा क्या होता है? You have opened it, you just leg it. अब वहां पे कोई आपके डेटा को मॉनिटर नहीं कर सकता. फाइन, आपके डेटा को मॉनिटर नहीं कर सकता और वो आपके डेटा को स्टोर नहीं करेगा. फाइन, तो यहां पे आप थोड़ा बेटर कंफर्ट लेवल को महसूस करेंगे. मींस यू विल बी फाइंडिंग इट मच सिक्योर. So whenever you have to do a financial transaction on a Chrome, better to go for a incognito mode. If you have a privilege of Edge, that is a Microsoft browsing, then use that browser there. That is more secure in comparison to Chrome there. यहाँ more secure का मतलब ये है कि ज्यादातर लोग Chrome यूज कर रहे हैं, तो Chrome पे अटैक की पॉसिबिलिटी ज्यादा है. और Microsoft basically is you have to going to pay for it. आप विंडोज खरीदते हैं, उसके साथ वो मिलता है. देन इट्स अ लायबिलिटी ऑन अ माइक्रोसॉफ्ट टू मेक इट अ सिक्योर देयर. सो हियर इट्स मोर सिक्योर व्हेन टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देयर. फाइन. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर यूजिंग मल्टीपल टैब, make sure when you come back and you have a sensitive information, never enter data just by coming back. Always after refreshing and checking the URL there. Now, अब एक और important चीज है, when those who are using public computers there, if you are using a public computer, that's a computer there, then you have to detect one more thing.
That is your keylogger. What is keylogger? Keyloggers are hardware or a software that can capture what you are entering from a keyboard. तो अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है कि what we are entering from a keyboard, and it is basically creating a file of all those data that we are basically entering it. So here keylogger का आपको दिखाते हैं आपको फोटो. So if you may be using a public computer there, तो कभी हम पीछे मुड़ के तो उसको देखते नहीं है कि उसके पीछे क्या लगा हुआ है. So if you look at this one, there is a device that is attached to keyboard. This is a black device that is attached to a keyboard. What is the purpose of it? If you type anything, it will record it. Fine. So if you type your username, if you type your password, if you type your banking details there, it will basically record it. Later on, a hacker will take this and it will try to check it out what you have typed it, and based on data it may able to get your login and password there. So whenever you are using public computer, in case cyber cafe there, in some labs there, make sure that you are basically using a system that is free from hardware. This is a keylogger there, but this is not only that available in a hardware, it's basically software also. In some systems in a public domain, they you find that there is a software that is also recording what you are typing there. So keylogger is also a problem here. So on a public system, when you have to enter details, try to use virtual keyboards. Virtual keyboards, that is keyboard provided by the web pages, or in case of a Windows there, you may find that you can have a virtual keyboard and you can type using virtual keyboard there, so that these details cannot be captured by keyloggers there. Fine. Able to understand this thing? Yes, sir. Yes, sir. आपके अपने सिस्टम में इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, because you have access to the system. बट जब आप कहीं इंटरनेट कैफे पे हो, कहीं और बाहर हो, वहां पे आपको कुछ भी नहीं पता कि इस पे कीलॉगर है कि नहीं है. हार्डवेयर का होगा तो आप उसको देख सकते हैं, बट इफ इट इज इंस्टॉल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, you won't be able to detect it. So better to avoid using keyboard on a public computer. So वहां पे आप वर्चुअल कीबोर्ड को यूज करिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पासवर्ड सिक्योरिटी, जो सबको पता है, बट आई जस्ट रिवाइज इट अगेन so that it may become a much more convincing that this is one of the important factor of security here. So let's try to see a password security. So what is this password security there? Now before password security, I am just asking you few questions. If you have a sheet of a paper, you try to answer this question on your this sheet of paper. What is your name? What is your father's name? What is your mother's name? What is your wife or husband's name? Their nickname, their date of birth, your mobile number, your children's there, your bike and car number. Fine. So if you list these things, fine, and then try to compare your password. Your password most of the time is basically a combination of these values. True or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So identity theft. जस्ट हमने आपसे कुछ पूछा नहीं, बस आपको अपने सामने लिख लेना है. आप खुद देखेंगे कि हमारा पासवर्ड जो है वो इन सब चीजों से बना हुआ है. सो इफ आई एम एबल टू स्टील योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, आई एम हैविंग एक्सेस टू योर पासवर्ड और नॉट? Definitely, sir. Definitely. Definitely, sir. तो हमने तो अपना पासवर्ड बताया नहीं है, पर ये जो आइडेंटिटी थेफ्ट है, दैट इज अ प्रॉब्लम. Identity theft is basically using your personal information, because we have to enter lots of password, और पासवर्ड को याद रखना भी आसान काम नहीं है, तो हम अपना आसान पासवर्ड बनाते हैं. आसान पासवर्ड क्या होगा? जिस चीज को हम रिमेंबर कर सके. सो हियर व्हाट इज देयर, हाउ दे बेसिकली हैक. तो सबसे पहले तो वो पासवर्ड ही मिल जाए. आई टोल्ड यू शोल्डर सर्फिंग, शोल्डर सर्फिंग की तो पासवर्ड मिल सकता है. नेक्स्ट व्हाट दे कैन डू,
they can use dictionary attack. Dictionary attack means I am using a password that is directly coming from a English dictionary. For example, Quest, Apple, anything else. So that can be again possibility. So I'm not using my personal detail, but I'm using a word there. On the basis of that, I'm defining my password. So dictionary attack is a possibility. Next, it is basically using a social engineering. Then you may be able to write your password to some location. Now that sheet of paper, that data has been reached to the hacker there, or he or she has installed certain application. On this from application, they are stealing their data. So they may be able to capture your password. And with just approximately 30 to 60 tries, passwords of 80% individuals can be easily cracked. So password cracking is not a very difficult problem. You may find lots of tools in a public domain that can be used for cracking your password. आप भी किसी का पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं उस टूल के लिए, उसके लिए कोई इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है. It requires certain information, you provide this information and it will be able to crack a password for you. अगर आप अपना पासवर्ड ही भूल गए हो तो उन टूल के थ्रू अपने पासवर्ड को दोबारा जनरेट भी कर सकते हैं. It will be able to do it for you. Fine. So this is a possibility there. So अब इससे हम बचे कैसे, कैसे हम अपने पासवर्ड को सिक्योर कर सकें? वो तरीका सबको पता है, पर क्या वो तरीका इतना आसान है? फर्स्ट थिंग, यूज डिफरेंट पासवर्ड फॉर ईच सर्विस. हम कितनी सर्विसेज को यूज करते हैं ये हमें खुद भी नहीं पता, तो हम सबके पासवर्ड को कैसे रिमेंबर करेंगे? फाइन. यूज लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स पासवर्ड, दैट इज अनदर रिक्वायरमेंट. तो आपसे कहते हैं कि मेक अ 10 डिजिट पासवर्ड, यूज दैट्स अ upper case, smaller case, special symbol, number, and interchange them so that the password is very complex. Change password regularly. This we can do it, and this we should do it because हमारा डेटा हो सकता है कि वो डार्क वेब में अवेलेबल हो, डोमेन नेम और पासवर्ड. पर अगर हम पासवर्ड को चेंज कर देते हैं, then it's a possibility that still my data is not useful for them. So if you use or change your password regularly, this can be very helpful to make you secure there. So do not use your password on a shared computer. ये भी बहुत मुश्किल काम है. कंप्यूटर कई लोग शेयर करते हैं, हमारे बच्चे भी शेयर करेंगे, बाकी दोस्त भी शेयर करेंगे. So that's again a difficult thing. Or you can use passphrase. Have you heard about this passphrase? What is this passphrase? So let's try to see how to make my password secure. So let's take, I have basically just have a statement there. Never judge a book by its cover. What's the meaning of this statement? You don't know what is the content based on the cover there. Fine. Can I convert this passphrase into a password? And that too difficult one. So look at this one. Never judge a book by its cover. So here I say my password is NJABBIC. Fine. But this is simple. All of them are in a alphabets of a language there. So how to make them as a better one? So I say NNJ remain as such. Wherever there is A, I may replace it by address of. A special symbol, A is replaced by address of, B is replaced by 6, I is replaced by exclamation marks, and then C is basically I am making it as a capital. Fine. So what you have to remember? You have to remember a passphrase. You don't have to remember a password there. I just remember a passphrase, and this passphrase is converted into a strong password. It consists of alphabets, numbers, special symbols, both capital and small there. Fine. So these strategy can help you to design passwords
that can be safer and easy to remember. Is it okay? Yes, sir. Right. Yes, So sir. here, Yes, sir. what is let's take it. Then you may have to change your password. After some time, it is asking to change your password. Then what to do? So I may add more symbols to it. Mine is a first attempt. I just say #1. Same thing, and adding one more part to it. Now, question is that why I'm doing this thing? Why, when changing it, actually password is not saved. कभी कोई आप जो जितने आपके साइट्स हैं वो आपके पासवर्ड को सेव नहीं करते हैं, वो इस पासवर्ड के एक स्पेशल वैल्यू को सेव करते हैं, दैट वी कॉल इज एज अ हैश वैल्यू. तो वो हैश वैल्यू जब आप पासवर्ड डालोगे, इट्स कन्वर्टेड टू हैश एंड हैश इज ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट. तो अगर आप एक भी अल्फाबेट को चेंज कर दोगे तो आपकी हैश वैल्यू में ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा. सो आई कैन यूज दिस, make a minor change in a password, I can use it again and again, and this will be entirely different from the previous one. So this can help. This can help you to remember, and you can have a different password for different services. आप अपनी सर्विसेज को नंबर कर लीजिए, उसके साथ पासवर्ड पर नंबर डाल दीजिए. This may help you. Or there is a one more possibility. We can have a multi-factor authentication. What is this multi-factor authentication? ये अपना आपको देख ही रहे हैं कि जब हम लॉगिन करते हैं एसबीआई में तो हम अपना लॉगिन पासवर्ड देते हैं, उसके बाद एक ओटीपी आता है, उस ओटीपी को एंटर करेंगे, देन ओनली आई विल बी एबल टू लॉग इन देयर. सो हियर ऑथेंटिकेशन इज डन ट्वाइस, वन थ्रू अ लॉगिन एंड पासवर्ड जो हमें रिमेंबर था, दूसरा एक ओटीपी आता है, मींस नाउ दैट आई एम हैविंग अ डिवाइस, that device is also with me, and using this device I will be able to enter the OTP there. So two level of authentication. अगर किसी को यूजर और पासवर्ड मिल भी गया तो भी वो मेरे अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास अभी मेरा फोन नहीं है. अब उसको मेहनत और करनी पड़ेगी कि उसको मेरा फोन भी चाहिए. तो वो कैसे आपका फोन कर ले लेगा? Now this again can be a social engineering there. उसका फोन आपके पास उसका फोन नहीं है, सॉरी उसके पास आपका फोन नहीं है, इट मे मेक यू अ कॉल. वो आपके लॉगिन को पासवर्ड को एंटर करता है, आपको एक कॉल करेगा, कॉल में आपसे हो सकता कुछ बात करे, ही मे कन्विंस यू टू शेयर योर स्क्रीन. इफ यू आर एबल टू शेयर योर स्क्रीन, he may log in, it will ask for the OTP reaches to your phone, it will copy this OTP and do a login there. So again there is a possibility that he may be tricking you to reveal your OTP there. So अगर कोई ऐसा कॉल करता है, स्क्रीन शेयर करता है, जैसे अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, that is on Google Meet, Zoom, even WhatsApp, we are sharing a screen. Whenever we are sharing a screen, we are also revealing our information. हमारे स्क्रीन पे जो कुछ भी आएगा वो दूसरे तक जाएगा. और एक पॉसिबिलिटी है, he may call you and asking to allow the second user to join your call. आपके साथ उसने कॉल करी, you are talking to him, and then he asks, my friend is also want to be in a part of a conversation, please allow him. What will happen? You just allow him. वो पासवर्ड की कॉल हो सकती है, your OTP is on the call, he will be just waiting for this call. As soon as you connect it, he may copy your OTP and use this OTP for login. So two-way factor authentication helpful है, but अगर हम उसमें भी थोड़ी सी कुदाई करेंगे और थोड़ा सा उसमें रिलैक्स हो जाएंगे, then there is a possibility that I may be also revealing my OTP to the hacker. Right? So get there. So just quickly, I have 2-3 minutes. So just quickly go through what we have to cover again. So I think you are aware of it. Now next thing is that what we have to do it. I have to have a strong password. If possible, you have a multi-factor factor authentication. Now you protect your operating system. What's the meaning there? When we say protecting your operating system, I was talking about the installing patches there. Install your update there. What is the importance of updates? Update means
your system is having certain vulnerability, and this vulnerability can be used by hacker, and this information is available with your operating system. So they patch it, create an update, and provide it. So you must update your Assalamualaikum, system. Dr. Saiful Islam Saab. Yeah. Assalamualaikum. This is Dr. Faiza, the director at the UGC MMTTC. Yeah, ma'am. So it's great to see you here, your lecture going in great flow. Can we now wind up because it's time for the valedictory? Okay, ma'am. Fine. No problem with that. Because of some disturbance, I think I have to show 2 more slides there. Can I show those slides just to get an idea there? Yes, please, quickly. Just quickly, brother. So what you have to do, you just protect your operating system. As soon as updates are available, install them, because they are basically helping you to patch the that's the vulnerabilities in your operating system, so that your system may become secure. So operating system use kar rahe hain, so you just update those use updates and install those updates. If you are using mobile phone, go for software update, because these are updates means already some vulnerability is there. If you won't install, this vulnerability is available on system and it can be used by hacker there. So if you are using that's like a browser there, if somehow pop-up is shown on your screen, if pop-up is shown on your screen and you are not sure, never click on yes, no or cancel. Always remove it using cross button. अगर आप yes, no और cancel पे भी करेंगे तो भी उसका काम हो जाएगा. तो if you are not sure, always close pop-up using cross there. If you have I just already told you, if you know about the secure transaction, just go for this symbol there. This symbol gives you idea that this transaction is secure using encryption. Means transaction यहाँ पे क्या हुआ, ये एक valid transaction हुआ HTTPS. Data is encrypted, and if you go into detail, this will show you this is a valid site and its certificate is valid. So this will give you a comfort that you are using a site that is basically protected and your data will not be lost. So just by having these things at the time of browsing, you will be able to make your browsing secure. So just be attentive, try to see what is going on. If possible, always go through the address bar, and if it is HTTPS, always check this is green or red. If you are not sure, just click on it. You will find that this is a certificate. If certificate is valid, then at least you are using a site that is a genuine site. So I think with this, I'm just stopping at this point, and thanks for your patience listening. Thank you. I hope I can make some difference and to make you more secure. Yes, this must have certainly gone a long way. I will request you to stay for another 2 minutes before we begin the valedictory. Participants, मेरी आप सबसे गुजारिश है 1 मिनट के लिए अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, हम एक ग्रुप फोटोग्राफ लेंगे. And Dr. Saiful Islam, you can end your presentation now. Okay, thank you very much. जी. Everyone, please switch your videos on just for 1 minute. We will take a screenshot of the group. Yes. Everyone, please. Okay, almost. जी शम्स तब्रेज़ साहब, आप अपने को म्यूट करें और वीडियो ऑन करें. शम्स तब्रेज़ जी. All right, say cheese. एक और. Just a minute. Let me take one more. Why there are so few people here? Actually, there's another training program going on. There you are. Thank you. Thank you so much. So, Dr. Saiful Islam, I'm very grateful to you for your session. And I'm also grateful to Professor Asim Zafar for arranging with you for a session. I'm sure participants would have greatly benefited. Thank you very much, ma'am. Thank you so much. If you want, you can. Thank you, ma'am. Thank you very much, ma'am.
थैंक यू मैम। ओके ओके, पार्टिसिपेंट्स अभी रुकेंगे, हम एक 10 मिनट का वैलिडिक्ट्री करेंगे। मुझे भी कुछ चीजें आपको बतानी है, जरूरी है, और उसके बाद हम वन लास्ट टाइम आपसे खुदा हाफिज कहेंगे। तो आप सबका खैर मकदम है इस छोटी सी वैलिडिक्ट्री में। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आप सबने हमारे साथ ये कोर्स ज्वाइन किया। मुझे मालूम है इसमें सिर्फ AMU के ही नहीं बल्कि बाहर के भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, दूसरे यूनिवर्सिटीज के और कॉलेजेस के। मैं उनका खास करके तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही अहम टॉपिक है, और इसी परेशानी के मद्देनजर कि आजकल लोगों का बड़ा डिजिटल अरेस्ट हो रहा है और उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जा रहे हैं, UGC की ये कोशिश है कि सभी तक ये अवेयरनेस जाए कि किस तरह से ऑनलाइन जो इंटरनेट का देयर इज अ ग्रोइंग यूनिवर्स देयर, उसमें हम सब अपने आप को सेफ रख सकें, अपने आप को महफूज रख सकें। मैं सबसे पहले आप सबकी जानिब से प्रोफेसर आसिम जफर का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो बेहद मसरूफ रहते हैं, लेकिन फॉर द sheer act of teaching learning I have seen great passion in Professor Asim Zafar. Despite all his occupations, pressing occupations, he found time for this course. और आप सब भी कोई कम मसरूफ नहीं रहते हैं, मैं देख सकती हूँ जो भी यहाँ है वो इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप सबके पास है, फिर भी आप कुछ सीखना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है ये सर्टिफिकेट आपके काम आएगा। मेरे पास बहुत दिनों से नॉन टीचिंग स्टाफ से रिक्वेस्ट आ रही थी, डॉक्टर साजिदा नदीम यहाँ पे हैं, ये मुझे जहाँ मिलती थी कहती थी कि आप कोर्सेज कराती हैं, आप हमारे लिए कुछ क्यों नहीं कराती हैं। तो इस दफ़ा जब हमने UGC की तरफ से, हमें नॉर्मली तो टीचर्स के ही कोर्सेज एलोकेट होते हैं, जब हमें ये डायरेक्शन आया कि हम करवा सकते हैं नॉन एकेडमिक स्टाफ के लिए, तो सबसे पहले मैंने इस मौके को हाथों हाथ लिया। और आपके लिए मुझे लगता है ये एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक था जिसपे ये कोर्स आपके लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका सर्टिफिकेट 2 से 1 दिन में आपको मिल जाएगा। उसके लिए हम ग्रुप पे ही एक लिंक शेयर करेंगे, वो लिंक अगर आप उसका कोड डालेंगे, अपना फोन नंबर डालना होता है उसमें, आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। इस सर्टिफिकेट को आप बार बार डाउनलोड कर सकते हैं, तो जरूरत नहीं है कि आप इसको सेव करें या प्रिंट करके रखें। Multiple times you can download this certificate. If you have any problem, you can always get back to us. Our team is always there to handhold you through the certificate process. सभी ने अपने सभी असाइनमेंट्स जमा कर दिए हैं, 2 MCQ, 1 रिटन असाइनमेंट। सबका हो गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। राइट, वेरी गुड। जिसका हो गया है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको सक्सेसफुली आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू मैम। you're welcome. जिसका नहीं हुआ है उसको मैं ये बताना चाहूंगी कि हम आपको कुछ वक्त दे रहे हैं, 2 से 3 दिन में आप अपने सारे असाइनमेंट्स प्लीज अपलोड कर दीजिए। उसके बिना आपका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो पाएगा, हमारे एंड से वो पॉसिबल नहीं होगा कि हम आपका सर्टिफिकेट जनरेट करें जब तक कि आपके सारे हमें मिल नहीं जाते। जो आप में से कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि आपको सारे रिसोर्स पर्सन्स के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस चाहिए, तो देखिए बहुत रिसोर्स पर्सन एग्जैक्टली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, उन्हें लगता है कि ये कोई और यूज़ कर लेगा, इस पर उनका IPR है नहीं है, मगर आपको उनके लेक्चर से इस्तेफादा करना है। इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट। तो हमारे जितने भी रिसोर्स पर्सन्स के लेक्चर्स हुए हैं, द एंटायर प्रोसीडिंग्स ऑफ दिस क्लास, दिस एंटायर कोर्स, आप ऊपर देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे एक रेड कलर का बटन है, उसमें 2 वाइट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हमने सारी प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड किया है और हम इसका लिंक आपके गूगल क्लासरूम पे आपसे शेयर कर रहे हैं। जब चाहें आप कोई भी लेक्चर दोबारा सुन सकते हैं, ऑलवेज, एनी टाइम। लेकिन हम एज रीडिंग मटेरियल बहुत ज़्यादा रिसोर्स पर्सन से ज़बरदस्ती नहीं कर पाते हैं कि वो हमें अपना पावर पॉइंट दे ही दें, और अक्सर वो नहीं देते हैं, तो हमारे पार्टिसिपेंट्स का कोई नुकसान ना हो इसलिए मैं इस बात का पूरा ख्याल रखती हूँ। हमारे सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड है और आपको वहाँ पर ये ज़रूर मिल जाएंगे। आपको गूगल क्लासरूम पे जाना है, हमने इन्हें यूट्यूब पे भी डाला, हम आपसे इनका अपना ड्राइव का लिंक भी शेयर कर लेते हैं। मुझे बहुत इश्तियाक है कि मैं आपसे भी कुछ सुनूं, तो कोई 2-1 लोग जिन्होंने इस कोर्स से कुछ सीखा और
उन्हें कैसा लगा, और आइंदा आप कैसे कोर्सेज करना चाहते हैं, कुछ टॉपिक्स आप हमें बताइए जो हम आपके लिए अगले सालों में कर सकें। और ये कोर्स अगर इसको करने में कहीं आपको, देखिए हमने पूरा इस बात का ख्याल रखा कि आपको शाम में क्लासेस हों ताकि आप इसमें आ सकें। आपका काम भी है, मुझे अंदाज़ा है किसी को शायद रिलीविंग नहीं भी मिली है, लेकिन फिर भी अगर कुछ हमसे रह गया हो, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक दिस एंटायर प्रोसेस वेरी स्मूथ एंड वेरी कंफर्टेबल फॉर यू। तो 2-3 लोगों से मैं सुनना चाहूंगी। बताएं, नफीस अहमद खान साहब, वुड यू लाइक टू से समथिंग? यस मैम, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मैम। अस्सलाम। अपना तारुफ तो 2 लाइन में पेश कर दें और फिर आप हमें बताएं आपका फीडबैक क्या है। जी, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में असिस्टेंट रजिस्ट्रार हूँ। तो बहुत अच्छा रहा ये 6 डेज का जो साइबर सिक्योरिटी पे जो हुआ प्रोग्राम। और थोड़ी सी दुश्वारी हुई कि सेकेंड हाफ में था तो हम लोग काफ़ी बिजी रहते हैं, तो ऑफिस का काम वाम भी बीच में कुछ कुछ था। तो अगर अगली बार से मान लिया 6 बजे के बाद किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। 6 बजे शाम के बाद कोई फैमिली लाइफ नहीं है क्या हमारी? हम नहीं दिन सर, भर हम काम करेंगे और फिर 6 और बजे से रात के 12 बजे तक हम पढ़ाई करेंगे। और संडेज को भी हो तो ज्यादा कंसंट्रेट कर पाएगा। अब हम लोग आदमी इतना फ्रीडम नहीं देते रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर के एकदम ये फ्री। आपका अच्छा सजेशन है, इसमें हम संडे और सैटरडे करेंगे और उसके जी बजाय जी, एक मंडे ट्यूसडे छुट्टी कर सकते हैं। इससे पहले हमने वो 4 वीक्स का जो हुआ था एक ARDRs के लिए, वो भी किया था। वो भी काफी अच्छा प्रोग्राम हुआ था। वो बहुत बहुत देर अच्छा। शाम से हम एक्चुअली हमने सर्दियों में किया था, इसलिए हमने उसको मगरिब के बाद रखा था, लेकिन जी अभी जी दिन इतने लंबे हो रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। और जी, कुछ नफीस साहब? थैंक यू। या नहीं मैम ठीक है, रिसोर्स पर्सन वगैरह तो काफी अच्छे हैं और आपका अपना MMTC भी काफी अच्छा है। थैंक तो यू। आइंदा भी जो भी रिलेवेंट कोर्सेज हैं जो हम लोगों के डे टू डे अफेयर्स में काम आ सकते हैं तो वो आप अपना करवा सकते हैं। जरूर थैंक जरूर। यू मैडम। मेरा ये अज़्म है कि हर साल अब आपके लिए हम एक ऐसा शॉर्ट टर्म कोर्स जरूर किया करेंगे, और कुछ टॉपिक्स अगर आप हमें बता सकें। साइबर सिक्योरिटी एक है, RTI मुझे लगता है एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी जी इस पे आपका होना चाहिए कोर्स 6 दिन का। पहले हम 1-2 दिन का करा चुके हैं, लेकिन मैंने सोचा अगले साल मैं RTI पे कराऊंगी। और भी अगर कुछ आपके जहन में है। लीगल वगैरह भी, लीगल मैटर्स भी काफी बढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, तो उस पर भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स वगैरह जो हैं और भी ओके, हो सकते हैं। जरूर जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, वेलकम। थैंक यू। ऑल द बेस्ट टू यू। जी, एनीबॉडी एल्स? डॉक्टर मौलाना साजिदा आजाद से नदीम, बात आप कर रही हूँ। बोलेंगे कुछ? यस मैम, एक तो जो बताइए। आपने कराया, थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोगों ने ये जो कोर्स जो कंडक्ट कराया है वो हम लोगों के लिए बहुत यूजफुल है, और बहुत सारी चीजें हमको इसके अंदर नई पता लगी और बहुत अच्छा भी लगा, काफी इंफॉर्मेटिव था ये कोर्स। लेकिन मेरा इस सजेशन ये है कि आप AI टूल्स के ऊपर भी एक जो है कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्स कराएं, क्योंकि जितने भी ऑफिस के में जितने भी लोग हैं उनको बहुत ज़रूरत है कि वो AI टूल्स का यूज़ करें, जिससे काफ़ी लोग अवेयर नहीं है। इनफैक्ट मैं भी बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इसके लिए कुछ मतलब लर्न करूँ, कुछ नया सीखूँ। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट कोर्स आप AI टूल्स के ऊपर रखें तो ये हम लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके, नो, आई हैव नोटेड इट डाउन। आप अपने फीडबैक फॉर्म में ये सब डाल दीजिएगा, आप हमें लिख के देंगे, दैट विल बी वेरी गुड। एक, हाँ, जैसे आपने MCQ किया है वैसे आपको एक फीडबैक फॉर्म भी भरना है, और ये सारी चीजें हमारे पास आ जाएंगी तो हम फिर आपका सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। फीडबैक फॉर्म का लिंक भी आपको गूगल क्लासरूम पे दे दिया जाएगा। ओके, आई थिंक नूर बानो, नूर फातिमा, सॉरी नूर फातिमा। नहीं मैम, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी लखनऊ कैंपस से हूँ मैम। वीडियो ऑन कीजिए, अब आप हमें देख रही हैं, हम आपको सिर्फ सुन रहे हैं। जरूर जरूर। हाँ, तो शुरू में तो मुझे लग रहा था मैम के नॉन एकेडमिक सब लोग हैं साइबर, लेकिन मुझे ये टॉपिक बहुत दिलचस्प लग रहा था साइबर सिक्योरिटी वाला, क्योंकि इससे बचने के लिए ना सिर्फ तालीम काफी नहीं है, एजुकेशन, बल्कि अवेयरनेस की जरूरत है, जो कहीं ना कहीं हम सब लोग उसमें कभी कभी मार खा जाते हैं। जैसे मैं खुद इसका शिकार हो चुकी हूँ पहले, और अगर शायद ये मैंने वर्कशॉप की होती है शॉर्ट टर्म कोर्स तो शायद ऐसा नहीं होता, क्योंकि
उन्होंने बताया काफी, मनसब सर जो आए थे, कि कैसे हमें मैसेजेस को चेक नहीं करना चाहिए उस वक्त, और जो भी, और डिजिटल अरेस्ट जो आजकल बहुत स्कैम चल रहा है उससे बचने का, और कैसे हम जो है वो ट्रस्टेड जो वेबसाइट है उनको पहचान सकते हैं खास तौर से, और किस तरह से फिशिंग से और दूसरी चीजों से बचा जा सकता है। तो मुझे लगता है मैंने काफी कुछ पर्सनली इससे सीखा है कोर्स से, और इन सब लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा, और पता नहीं चला कि 7 दिन कहाँ गुजर गए। और आपने बहुत अच्छे अच्छे जो टॉपिक्स थे उससे रिलेटेड ऑलमोस्ट हर एरिया को कवर किया है। तो मैम मैं आपको भी बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ से लगातार जुड़ी हुई हूँ, मैं भी एलिगेरियन हूँ, काफी कोर्सेज कर चुकी हूँ इधर से डायरेक्टर साहिबा भी एलिगेरियन है। जी जी जी, आप भी, और हमारे यहाँ जो हमारी अच्छी दोस्त है। हाँ जी जी जी, वो एलिगेरियन है, उनके तो वालिद साहब भी उधर ही थे। मैम बहुत अच्छा लगा और काफी कुछ सीखने को मिला, मतलब कुछ नया था और बहुत अलग हट करके था, बहुत मजा आया। एक बार फिर आपका और यूजीसी एमएमटीसी का और आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। हाँ। कोई टॉपिक्स और हैं आपके जहन में आइंदा के लिए जिन पे आप ट्रेनिंग चाहती? मैम एक्चुअली जैसे साजिदा जी ने कहा कि जो आजकल हम बड़ा एआई टूल्स का और इतना कंफ्यूजिंग है, हमें समझ ही नहीं आता कि मतलब रियल क्या है और फेक क्या है। तो शायद अगर इस पे वर्कशॉप होगी तो हम आसानी से ये समझ सकेंगे, डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये सही है या गलत है, क्योंकि हमारे पास कोई भी वीडियो आती है तो हम लोग इजीली उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं कि ये सच है, जबकि उसको पहचानने का कोई ना कोई तरीका होता है, वो लगता है कि नहीं ये आई है और ये, तो उससे वो अच्छा रहेगा। क्योंकि ये कोर्स तो हम बहुत कर चुके हैं ना अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, और ये सब चीजें, ये कुछ नया है, इससे कुछ नया सीखने को मिलेगा, और वक्त का तकाजा भी है आजकल इन सब चीजों को सीखा जाए। तो मुझे साजिदा जी का सजेशन बहुत अच्छा लगा कि वो एआई पे एक होना चाहिए। any other topic that you want to learn? या मैम आज कल को सोच के बता दीजिएगा। हाँ मैं इंशाल्लाह आप सोच के थोड़ा सा अपने हमारे गूगल क्लासरूम में जो आप फीडबैक डाल रही हैं उसमें लिख दीजिएगा। ओके, आई थिंक आई कैन सी अनदर रेज्ड हैंड, आकिल हुसैन। जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ एज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर। और ये जो शॉर्ट टर्म कोर्स हुआ है मैडम, ये बहुत ही बेनिफिशियल रहा हम लोगों के लिए, क्योंकि इतना जो है अलार्मिंग टॉपिक है ये साइबर सिक्योरिटी। आए दिन हम लोग यूनिवर्सिटी में भी जो है कई हमारे कलीग्स जो हैं वो इस चीज़ से इफेक्टेड हुए हैं। बहुत सारे केसेस हम लोगों के मतलब मिलने जुलने वालों में भी ऐसे हुए हैं। कई बार ऑफिसर्स में भी जो है इस तरह के फिशिंग ईमेल्स वगैरह आते हैं, जिसको हमारा आईटी डिपार्टमेंट जो है जामिया का वो भी बार बार अलार्म कॉल हमें मतलब मैसेजेस करता रहता है कि इस तरह के फिशिंग मेल जो है वो आ रहे हैं, उसको आप जो है थोड़ा वो रहें सेफ और वो रहें। और दूसरी चीज मैम, ये बहुत मुबारकबाद है आपको इस चीज के लिए कि ये पूरा 6 दिन जो है चला, बहुत अच्छा था। ये एक नया एक और टॉपिक है मैडम, जिस पर अगर हम लोग अगर आप चाहें तो जो है नेक्स्ट उसमें करा सकते हैं, वो है एनईपी, नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा चूंकि यूनिवर्सिटीज में अब वो इम्प्लीमेंट हो रहा है धीरे धीरे करके, पूरे तौर पे हम उसको जो है अडॉप्ट कर रहे हैं एनईपी को। बहुत सारे कोर्सेज हमारे यहाँ एनईपी में जो है क्या कहते हैं अडॉप्ट कर लिए गए हैं, लेकिन बहुत सारे कोर्सेज जो अभी भी नहीं भी किए गए वो आने वाले टाइम में हो जाएंगे धीरे धीरे करके जामिया यूनिवर्सिटी में। तो मुझे लगता है एनईपी एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हमें थोड़ा सा और अगर हमें फोकस कराया जाए, थोड़ा वो कराया जाए तो थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा। दूसरा, एक नफीस सर ने अभी कहा ये ऑफिस प्रोसीडिंग पे, लीगल प्रोसीडिंग पे जो है एक कोई ऐसा शॉर्ट टर्म कोर्स हो, क्योंकि आजकल केसेस हम लोगों के यहाँ भी बहुत सारे जो है कोर्ट केसेस हो जाते हैं जिनमें जो है हमें पता नहीं होता कि अब हमें किधर की तरफ प्रोसीड करना है, क्या चीज हमें जो है क्या कहते हैं लीगल प्रोसीडिंग में देखनी है, क्या किस तरफ जाएं। तो थोड़ा सा ये अगर इस पे हो जाएगा तो अच्छा रहेगा मैडम, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा सजेशन है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आई हैव नोटेड इट डाउन। थोड़ा सा आप अपनी फीडबैक फॉर्म में भी लिख लीजिए, अगले साल हम आपको, हाँ, वी विल सी यू ऑन वन ऑफ दीज इंशाल्लाह। या हम आपके लिए एक इंटीग्रेटेड कोर्स ऐसा कर देंगे जिसमें हम ये सारी चीजें ले लेंगे। बहुत शुक्रिया। आपका 2 दिन का एआई टूल्स हो जाएगा, 2 दिन लीगल प्रोसीडिंग्स, 2 दिन आप इस तरह से ले लेंगे। शुक्रिया। वेल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और एक दफ़ा फिर मैं आप सबकी जानिब से प्रोफेसर आसिम जफर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ये पूरा कोर्स उनका ही डिज़ाइन किया हुआ था
और उन्होंने आपके लिए वक्त निकाला, आपको असाइनमेंट्स वगैरह भी उन्होंने ही बना के दिए, वही चेक भी करवाएंगे असाइनमेंट्स को। लेकिन आज वो मसरूफ हो गए हैं, वो आपको नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। बहरहाल हम उनकी खिदमत का यहाँ पे भरपूर एतराफ़ करते हैं, और मैं इसी के साथ आप सबको अपनी बहुत दिली मुबारकबाद और बहुत दिली नेक तमन्नाएं, और आइंदा हम फिर ज़रूर मिलेंगे कुछ ऐसे ही प्लेटफॉर्म पर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे, जिसमें कि हम मालविया मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर पे सिर्फ टीचर्स ही नहीं बल्कि जो सपोर्ट स्टाफ है जिनकी वजह से टीचिंग लर्निंग स्टूडेंट्स और टीचर्स की मुमकिन हो पाती है, ज़रूर उनको भी किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में साथ लेकर के चलेंगे। अब वक्त बहुत हो गया है, मैं आप सबको और ज़्यादा यहाँ नहीं रोकूंगी। आप 2 दिन इंतज़ार करें, आपके सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, गुड नाइट। खुदा हाफिज मैम, खुदा हाफिज मैम। खुदा हाफिज।